Okay. So when we talk about coordinate geometry, Mahit, you know what are coordinates? You write any point P, x, comma, y, right? So inside round bracket, when you write the value of x coordinate and y coordinate, and then you plot them and get different shapes. The part name of the chapter is coordinate geometry. Means you use coordinates for different shapes and then find out the coordinates of missing part of the figure. So this is very easy chapter, really easy chapter. But before we start, some theory part we need to discuss. Okay. For example, if I write y equal to 2x plus 3, y equal to 2x plus 3. And you know how to make truth table for this? The graph which we draw by making the coordinates x, y, x, y. You remember this? Nisarg? Mahit? In your first term, in simultaneous equation, solving graphically, थोड़ा part था ना? याद है आपको? It was there, no? आप लोग को था ना? Solving graphically. So they give equations and you plot them on graph paper and get the answer. So you used to make such tables. So you tell me, Miss Divija, for this values, which value you assume? For x you assume or for y you assume? X. For example, Nisar, x is 1. So you put 1 in the equation, if I आया. You put -1 in place of x. So क्या आएगा? +1. You put 0 in place of x. What do you get? 3. So Miss Divija, Anya, and Mahit, what I said just now, कि भाई x जो है, that is your choice, right? You decide what you want, and accordingly y value will come. So y is called dependent variable. Y is called which variable? Dependent variable. And x is called which variable? Independent variable. So first theory कि जो क्वेश्चन में इक्वेशन में जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट मीन्स लाइक f इक्वल टू ma, तो f इज अ सब्जेक्ट, w इक्वल टू mg, तो w इज द सब्जेक्ट, राइट? कोई भी इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस 80, तो v इज द सब्जेक्ट. In short, the variable which is separated as a single variable, that is called independent, and the one which you it's called dependent, and the one which you have on the other side, that is called independent. So Nisar, dependent and independent is very clear to you? Okay. कोऑर्डिनेट्स जो लिखते हैं मिस दिविजा, इसमें जो पहला होता है is known as abscissa, and second which is there is called ordinate. Please try to understand the term abscissa and ordinate. Okay, so ABSCI many of students they term this thing as abscissa. It's abscissa and ordinate. I'm getting this, Tanay? Mahit, abscissa means x value, ordinate means y value. The same as x and y. Now, Miss Anya, to plot these points, you know, what you draw is coordinate axis. कितने coordinate axis आपने देखे हैं बेटा? 2. The one which is horizontal is called which axis? X axis. The one which is vertical is called y axis. So one is x axis, one is y axis. Where there is an intersection, that is called origin. Okay, where both the coordinate axes meet, that point is called origin. This divides the graph, the plane, in 4 parts: part 1, part 2, part 3, and part 4. These are the 4. Beta, please come on time. Next time तुम लोग late मत आओ. So the entire graph is divided into 4 quadrants. You know, 1/4 part of something is called what? Quarter. तो यहाँ पे पूरे ग्राफ का, पूरे प्लेन का जो 1/4 part है, right, is the quadrant. First quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. You tell me, Mahit, it is the anti-clockwise or clockwise labeling done? It is anti-clockwise. Clock ऐसे जाती है, तो ऐसे 1 2 3 4 नहीं, it's 1 2 3 4. So this also you need to remember. First, second, third, fourth quadrant, origin, barabar. Now, Miss Anya, you plot points here, 1 2 3, they are all positive. You plot points here, -1 -2 -3, negative. Then you plot points above y-axis, +1 +2. You plot below here, they are -1 -2.
So the entire plane is divided into 4 parts. 1 quadrant, 2, 3rd, and 4th, positive, negative. So you tell me, Miss Anya, first quadrant mein, you take any point. What will be the sign? Plus, plus. Both are positive. This is called positive x-axis, positive y-axis. Barabar? Then Sure. here it is minus plus. X value is negative, y value is positive. The third one which is there, they both are negative, negative. See, first is positive, positive. Third is negative, negative. That is minus plus. And the fourth one is plus minus. So you need to remember the sign in which quadrant, which signs are coming, that you please remember, so that when you plot, you don't do any silly mistakes. Sure. Boliye? Can you help me with this again? I can't help you. You are joining online, joining 20 minutes late. Sorry, sir. I can't do. There are 7 students sitting here. They will be repeating this. There is a But recording of this lecture going on, beta. You go through later. just 5 minutes. I want you all to have a good discipline. This boy is coming again 20 minutes late. कोई 25 मिनट के बाद आएगा, मैं फिर से सिखाऊंगा. You need to have some discipline. For online, at least you can join on time. And I strictly told I will not allow you online. But last week also you told online. Today also you are online. So please have a quick revision of what we discussed till now. And I will never tolerate this. Please, we are doing coordinate geometry. You just club it into 2 parts. Coordinates means the point x and y. And geometry means geometric figures like triangle, rectangle, parallelogram. So in this chapter, what we are going to do is we are going to plot these points. Handaji, we are going to plot these points and we are going to develop geometric shapes. And then in that, there will be some missing coordinates or values that you have to find out. X coordinate is also, others can start writing because you already did this. X coordinate is also known as abscissa and Y coordinate is also known as ordinate. Abscissa, ordinate. Now, when you have any equation like y equal to 2x plus 3 is just one example. So your equation का जो subject होता है, subject of the equation which is there is called dependent variable. Subject of the equation is called dependent variable because the value of the subject is depending on the one which is on the opposite side. So जो single form में होगा, out of 2 variable, जो अकेला variable पड़ा हुआ है, that is called dependent and the other side wala is called independent. For example, Mahit, when you are going to have the table like y equal to 2x plus 3 ka table, so which values you are going to assume first, Nisarg? For x ke for y? For x. X के लिए आपने 1 लिया, you substitute 1 in that, y की value 5 आ गई, तो point हो गया 1 5. फिर से x के लिए -1 डालो, तो y की value +1 आएगी, तो नया point हो गया -1 1. x के बदले 0 डालो तो y की वैल्यू 3 आएगी, तो पॉइंट हो गया 0 3. ये तीनों पॉइंट को प्लॉट करेंगे, you are going to get a straight line. So in this chapter we are going to have such lines. The entire plane is divided into 4 parts: first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. Horizontal axis is known as x-axis, vertical axis is known as y-axis. These quadrants are in the anti-clockwise direction. First यहाँ पे है, second बाजू में है, third नीचे है, fourth comes here. So it's anti-clockwise. First quadrant, all points will have plus plus sign. Second quadrant, all points have minus plus sign. Third quadrants have minus minus. And fourth quadrants have plus minus. Rehan, Handa, and Miss Mehta. This is very clear to you all. This is on recording, so you can write later because we can't waste time for coming late and then copying and wasting half an hour like that. Now, this was the beginning of this chapter. Now let's start with good quality sums. But before that, one more thing I want to discuss. When I have 2 coordinate axes, Handa, 2 coordinate axes, this is known as which axis? X-axis. X-axis के ऊपर निसर्ग, all the values of y will be 0. On the x-axis, all the values of y will be 0. And same with Arsh, the one which is the vertical axis, you call it as y-axis. Y-axis के ऊपर कौन सा 0 आएगा बेटा? X value 0. Y पे
x0, x पे y0. For example, if this is the point P, so the value of, say, the number over there is on the 4, so it will be 4, 0. But the number is here somewhere on the y-axis, so uska x value 0 aayega and the y value. So I'm just showing you very simple form, okay, which value comes negative, which value comes positive. Okay, so please remember, on x-axis y is 0, on y-axis x is 0. Therefore you will always see this, Ms. Anya, कि x-axis पे कोई भी point होगा उसकी y value 0 होगी, और कोई भी point y-axis पे रहेगा तो उसकी कौन सी value 0 रहेगी, x value 0. I hope this is very clear, Babuji. Okay, now there will be some lines, Miss Mehta, like they say, draw a line x equal to 4, draw a line y equal to -4. तो तू बोलेगा सर यहाँ पे तो एक ही वेरिएबल है, there are no two variables. There are no two variables, मतलब आपको there is no need of making table. These lines can be drawn very easily, very easily. निसर्ग ध्यान से देखिए, x equal to 4 का लाइन कहाँ पे आएगा? x equal to 4 means x axis पे where 4 is there, x axis पे where 4 is there, through that you draw a straight line parallel to y axis. So this line is known as what? X equal to 4. I hope this is very clear. X4, how to draw on the x-axis where there is a point 4, you go for a straight line parallel to y-axis. Where there is x-axis pe 4, Hakani, x-axis pe where there is 4, you go for a straight line parallel to y-axis. Keep your video on. This line is called x equal to 4. And same way, Miss Divija, if I say y equal to -4, y equal to -4. So this is the line on the y-axis. This is the line on the y-axis passing through -4. So what it is called? Y equal to -4. Are you getting this? Are you getting this, Devansh? Handa, Darsh? दो लाइन बना दिए, y equal to 4, x equal to 4. कहां पे 0 है, कौन सी एक्सिस पे? I think so this is very clear to you all. Hakani. Hakani. Yeah. Now. Yeah. Now, there are some MCQ questions. I hope you all have textbooks. Please open your textbook, page number 338. Page number 338. बेटा थोड़ा वहां पे देखना 2 मिनट के लिए, फटाफट से हो जाएगा ये. Question 2. There are 4 sub questions. They're asking you which is dependent variable in this and which is independent. Pen नहीं लाया तो दर्श? He asked for pen, no? चलो, tell me, Miss Priyanshi, question 2 में first जो है, which is dependent and which is independent. Sir, बोलो. in school I asked my teacher if we have this. She said we only have distance formula in this. We haven't done this yet, but I don't think we do. You people told me coordinate geometry is still pending. That's why I started this. Let's finish it in the proper way because it's still pending. I can't waste that way. अभी तो करना पड़ेगा. Start कर दिया है. ये 10th पे भी काम में आएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें. चलो. Tell me, Priyanshi, which is the dependent in the first one and independent? खाली variable बोलवानो. खाली वेरिएबल बोलवानो. x. मेहता सेकंड वाले में डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट. थर्ड वाले में निसर्ग Independent x, independent y. एंड हकानी फोर्थ वाले में. So the y is the dependent one. And x is the independent one. This is very simple question. Question 3 is just to plot points. There's nothing big in that, to plot the points. Question 4, I'll be just doing one sum because it's again basic. 5x minus 3y is equal to y minus 3x is equal to 4 comma minus 4. Miss Anya, you can see this 5x minus 3y comma y minus 3x. It's just a comparison. Darsh, 5x minus 3y you will compare with
4. And y minus 3x you will compare with minus 4 and you get the value. Come on, write with me. 5x minus 3y is 4 and that minus 3x plus y is equal to minus 3x plus y is equal to minus 4. Darsh, to equate this, which coefficient you would like to make same? X. Y. Because सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करेगा तेरा काम सेम हो जाएगा ना, वहां पे ऊपर 3 नीचे 5 दो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा. चल, सो दर्श हंडा 5x minus 3y is 4, नीचे वाले को 3 से करोगे तो minus 3x 9x plus 3y equals minus 12. Priyanshi, now add or subtract. A minus या plus છે. Opposite sign, add, same sign, subtract. So by adding this equation, here you got minus 4x, here you got minus 8, x equals to 2. x की वैल्यू 2 जो है वो वहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो आपको दो अननोन थे यहाँ पे x and y. The values we got here. Come on, write down fast. Mahit, quick. This week you have any other holiday? No. What do you have on Wednesday? So holiday. Oh. And Thursday, Friday is half. So what time you leave from school? Thursday, Friday? What time you leave from school? I got 1 o'clock. That's called half day? Yeah, 9 to 1. So 2 hours early, right? 2 hours, 2 hours. You leave by 4 from school. Come on, Ms. Mehta. Done with this? Or for council members. Have to. तूने कौन सा हेयर कट करवा दिया बेटा इसे? जोमू कट. हाँ, अलग ही लग रहा है सच्ची में. बट यू लुक डिसेंट बॉय हैं. पहले तो एकदम भाई टाइप लगता था. चलो. कम ऑन हकानी, डन. Yeah. भाई साहब पांडे जी जल्दी करो आप. You look like chunky Pandey today. Chalo. Now again we have graph reading. Everyone observe the graph which is given. I'm not going to draw that. खाली हम answers लिखेंगे. Question 5 का graph देखो बेटा. Mehta and Malhotra. Tell me the points from the graph. Tell me the points from the graph जिसकी abscissa 2 है. Means आन्या abscissa means x value 2 है. देखो ग्राफ पर बताओ किस कौन से पॉइंट की x value 2 रहेगी. Quick. X axis पे 2 दिख रहा है आपको. So yeah, there you go straight and see which points are there on that line. And D. Come on, you got this Mahit. X की वैल्यू 2 वाले ग्राफ में पॉइंट देखे आपको मिले A and D. Second, Miss Divija, ordinate 0. Come on Divija, ordinate 0 मतलब y0. y0 मतलब कौन सी axis? X axis. So tell me which points we are on X axis? Only B. Hakani, ordinate 3. Ordinate means what? Y. Y3. तो Y वाली 3. Y3 लाइन देखो जरा एवरीवन. Y एक्सिस पे 3 में से पास होने वाली लाइन देखी प्रियांशी. क्या नंबर है? CB है ना लेफ्ट में. There are 2 points passing through Y equal to 3. दिख रहा है मल्होत्रा? C and E. हांडा जी, ऑर्डिनेट -4 मतलब y वैल्यू -4. तो y वैल्यू -4 वाले पॉइंट बोलो हांडा जी. हांडा बोलना. निसर्ग एब्सिसा 5. एब्सिसा मतलब x वैल्यू 5. x वैल्यू 5 वाले पॉइंट बोल बेटा. वेरी गुड. 3 पॉइंट है H, B एंड G. 6 मिस मल्होत्रा, जिसका एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट सेम है मतलब जिसकी x वैल्यू और y वैल्यू दोनों सेम है. विच पॉइंट्स हैव बोथ द वैल्यू सेम? A, I, H.
स्ट्रेट देख बेटा, ए के भी दोनों वैल्यू सेम है, आई के भी दोनों वैल्यू सेम है और एच के भी दोनों वैल्यू सेम है. द वन विच बाइसेक्स हकानी, द वन विच बाइसेक्स योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, एग्जैक्टली दो पार्ट, तो जितने पॉइंट वहां पे रहेंगे उसकी एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू सेम रहेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन यू विल आंसर मिस दिविजा. दिविजा क्या बोल रहे हैं देख. नेम द पॉइंट जिसका ऑर्डिनेट मतलब y इज हाफ ऑफ x, मतलब जो पॉइंट की y वैल्यू x से हाफ है, जो पॉइंट की y की वैल्यू x से हाफ है, y की वैल्यू x से हाफ है, y की वैल्यू x से हाफ है. बोल प्रियांश. मल्होत्रा. e e e के कोऑर्डिनेट्स क्या है पहले बोल, ग्राफ देख के. 6,3 6,3 तो देख 6 इज हाफ, 3 इज हाफ ऑफ, तो एक कौन सा पॉइंट हुआ नहीं सर, e. और कोई पॉइंट है जिसकी हाँ डी 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 की तो x वैल्यू नहीं, नो ओनली वन पॉइंट e. आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल. भैया समझे आप, ऐसे क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ थियोरी के लिए थे, एग्जाम में नहीं आएंगे. चलो, जस्ट टू अंडरस्टैंड द कोऑर्डिनेट्स यू आर गेटिंग दिस एमसीक्यू क्वेश्चंस. अगेन क्वेश्चन 6 भी हम ओरली करेंगे एंड ऑल आंसर्स हक्कानी विल टेल मी. कम ऑन हक्कानी. True or false? First question, read. The ordinate of a point is x-axis, x coordinate. False is y coordinate. Second. The origin is in the first quadrant. False. All the quadrants. Third. The y-axis is a vertical number line. True. True. Fourth. The point is located in one of the four quadrants. True. False. Points are definitely in the quadrants, but they are on the axis also. समझे? When I say points, points are in the quadrants definitely, but they are on the axis also. तो लोग क्या बोल रहे हैं कि points are in the quadrants, but they are on the axis also. So, but the axis is part of the quadrant, no? No. No. Okay. If the ordinate of a point is equal to its axis, the point lies either on the first quadrant or the second quadrant. Sir, अभी मैंने बताया यहाँ पे आपको कि जिसकी x एंड y वैल्यू सेम होती है, इसे है ना x एंड y वैल्यू सेम होती है, दे कैन बी ईदर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट और इन द थर्ड. so I said false, yeah. They are saying first and second, right? So what you will say हकानी? First and third, false. फर्स्ट में होते हैं वो लोग ने, फर्स्ट एंड सेकंड लिखा है, therefore it is false. Next. The origin lies on the x-axis. False. Because it is on the x-axis also and it is on y-axis. तू बोलेगा खाली x पे है या क्या बोला? Lies on x-axis. It lies on both the axes. The point AB lies on y-axis. 6 is a confusing. Origin lies on x-axis. Yes, it lies. True होगा, true. जरा पीछे चेक करो. So it says it lies on both axes, no? हाँ, but it lies on x-axis. Yes, जरा चेक करो एक बार. Check. Only x-axis लिखा होता है ना तो false होता है. यहाँ पे लिखा है origin lies on x-axis. True. So it's saying true. Yes. Because they're not written like that, no, only x-axis. They said origin lies on x-axis. Yes. Origin lies on y-axis. Yes. Be careful with such questions. Okay, Hakani? Yeah. 7. The point AB lies on y-axis if B is 0. So false. क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो मेहता it become a,0. Tell me, a,0 x पे होता है कि y पे होता है? x एक्सिस पे होता है. जिसका y वैल्यू 0 किस पे होता है? x. तो वो लोग y बोल रहे हैं. तो अगेन हकानी, ट्रू और फॉल्स? False. आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू. भाई साहब तू ध्यान दे. महीद क्यों हंसी आ रही है आपको बेटा? चलिए, आई होप दिस इज ट्रू और फॉल्स वेरी क्लियर टू यू. अयान सो रहे हैं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 7. इसके बाद ग्राफ स्टार्ट हो रहा है. आइए, 7th में भी 3 सम दिया है मेहता जी, हम तीसरा वाला कर रहे हैं. दे आर वेरी इजी. 5x minus 5 minus x is equal to, please confirm with school teacher that this chapter is there or not. And if they're not telling by this week, we'll finish this and then for some whatever topic left, you have to attend extra. So you need to be very careful. Talk to your madam yaar. You talk to her today. चलो, ये 2 इक्वेशन है हकानी. Yeah, please.
ये दो इक्वेशन है हंडा जी, पहली वाली से आपको x की वैल्यू मिलेगी, यहां से आपको y की वैल्यू मिलेगी, तो यू गेट द कोऑर्डिनेट्स, यस और नो? चलो सॉल्व करो इसको, दिखाओ मुझे। फर्स्ट इक्वेशन टेक एलसीएम एंड सॉल्व, सेकेंड इक्वेशन ऑल्सो टेक एलसीएम एंड सॉल्व, यहाँ पे इंटू 2 कर डालो, यहाँ पे इंटू 3 कर डालो, सॉल्व दिस फास्ट हाकी मैन, प्लीज सॉल्व। दिस इज अ क्लास वर्क एक्टिविटी, वेरी सिंपल सम। पहली वाली इक्वेशन सॉल्व करो, बी केयरफुल विद माइनस साइन, सेकेंड वाली इक्वेशन सॉल्व करो, आपको कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, एंड देन ग्राफ बुक निकालिए क्विक। So what do we have to do also in this? Sure. Yes, but the answer Rakani. So I'm getting x as 1, but I'm getting 30y equal 24. एक्शन में है भाई, तो 1,4/5, चेक किया आंसर बेटा, कम ऑन मिस मल्होत्रा, नाउ ग्राफ शीट्स पे आ जाओ बच्चों, प्रियांशी, चल Hakwinder, you got the answer. No, so 1 minute. You said half days on weekdays? 1 बजे स्कूल से निकलोगे आप, दूसरी क्लास में भी हो सकती है, हाफ डे। तो तू मत आना इधर, वी आर जस्ट डिस्कसिंग नाउ, अब तक किसने दिया नहीं है, यू आर टेलिंग हो सकती है, तो क्या मेरे क्लास को तो अवॉइड करेगा? तो फिर बेटा हाउ कैन यू से लाइक दैट? अब तक किसने बोला नहीं है ना, तो तू उनको ऐसा बोलना क्या मुकेश सर ने बोल दिया है कि ही वांट्स टू टेक एक्स्ट्रा, एंड यू प्लीज कंफर्म टुडे ओनली एंड टेल मी आफ्टर स्कूल दैट which chapter, because somebody told that you have full textbook, right? When you say full textbook, but everything will come, that's what they announced, right? Full textbook.
So what specifications will be there कि ये नहीं है और वो नहीं है. चलो. Now, again, each type one sum we are doing. They say ABCD is a rectangle. Come on, graph sheets निकालिए. ABCD is a rectangle. They will give you 3 vertex. आपको चौथा vertex ढूंढना होगा. And we are doing here for coordinates of A. A के coordinates क्या होंगे आपको ढूंढने हैं. चलिए ग्राफ शीट्स पे आ जाइए. B 10 4, C 0 4, D 0 minus 2. What they are saying is find the coordinates of A. दर्श पेंसिल मांगेगा ना अभी तू. निकाल. नाउ सी निसर्ग अपने को 10 तक जाना है राइट. तो फिट नहीं होगा तो यू कैन टेक 2 4 6 8 10. फिट हो रहा है देखो. यह 5 ब्लॉक्स 1 2 3 4 5 ब्लॉक है क्या वहां पे वाई के साइड में है ना. कॉर्नर एकदम लास्ट में आएगा 10. निसर्ग वाई वाला एकदम लास्ट में आ रहा है ना. 10 एकदम एंड में आ रहा है ना. Yes. That's fine. भैया मेरा कुछ नहीं लाता. Yeah, you can. दीदी जल्दी करो बच्ची. दीदी का डिस्ट्रैक्शन बहुत जल्दी हो जाता है. चलिए मिस प्रियांशी 10. यस हैंडीमैन. सॉरी Find in this. जोर से बोल. So why did you put A arrow question mark? ए के कोऑर्डिनेट ढूंढने हैं अपने को. बीसीडी दिया है. ए के कोऑर्डिनेट ढूंढने हैं ग्राफिकली. Okay. चलो हकानी. बी इज 10 4 गिवन. सी इज 0 4 गिवन. डी इज 0 minus 2 given. So you don't have to use different colors. I'm just drawing here to differentiate. You join this 3 coordinates. Hey Hakani, you join these coordinates. Now Darsh. So what is the number between those? What is the middle number of 13? middle number? Half. Half. Take 6. 1, 2, 3, 4. Okay, just take the 6 to say down. चलो शाबाश बच्चे. हाँ? तो हैंडी है हैंडी. मेंटली रफली गिनना क्या कर रहा है सब डिवीजन. 1, 2, हे भैया सुनिए. 3. अपने को रेक्टेंगल कंप्लीट करना है. क्या करना है दी भैया. ऐसे देख. ऐसे देखो मैं दे दूं और रेक्टेंगल कंप्लीट कर. तो क्या करेगी. राइट. कंप्लीट द फिगर. 3 वर्टेक्स आर देयर. अगर आपको चौथा बनाना है प्रियांशी. ए प्रियांशी तो आपको 2 लाइन एक्स्ट्रा बनानी पड़ेगी. मैं अलग कलर यूज कर रहा हूं यहाँ पे. ए हैंडीमैन. चलो नीसू 3 पॉइंट थे. कौन से सी डी. हकानी बी था. सी था और डी था. ओके तो ये तीनों को ज्वाइन करके अभी रेक्टेंगल कंप्लीट करना है. तो मैंने ग्रीन वाली लाइन बना दी. एंड वेयर दे इंटरसेक्ट दैट विल गिव यू ए. दर्श कैन यू टेल मी कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बाय ग्राफ. ऊपर देख. यहां देख. कैन यू टेल मी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए. -2, बेटा एक्स हमेशा पहले आता है. 10 and -. So the answer, the coordinates of A is 10, -2. Come on, write fast, Miss Priyanshi, Devansh, she.
चलो डन बच्चों, हो गया। और वेट, कम ऑन हकानी, 4 पॉइंट तो डालने थे बेटा। ओके चलो, हकीज। अरे वेट ना यार। इतना स्लो आदमी मैंने देखा नहीं लाइफ में। डन। क्यों इतना सोचते तब ऐसे करते हैं। या सर। चलो, तो दिस वाज अबाउट विच quadrilateral? Rectangle. Now same way we are going to work for parallelogram. चलो चलो दिविजा, गुड्डू, हकविंदर, महीते, महीत, चलो भैया प्लीज। दर्श, तेरे को लाइफ में कुछ है फोकस, टारगेट, अचीवमेंट का कुछ गोल है बेटा? कि रणबीर कपूर बनेगा? हाँ, वो ब्लॉग में नहीं नहीं, मैं कहाँ बोल रहा हूँ फ्लॉप। वो भी तेरे जैसा ही था, एकदम हेल्दी 9th में। बाद में खतरनाक एक्सरसाइज किया उसने, गन लेके चला गया। हाँ बेटा, सच्ची में मेरे को तेरे में उसमें क्वालिटीज दिखती है थोड़ी थोड़ी। पैरेलेलोग्राम। हाँ बेटा, A-2 B-8 C4-4 हक्कानी, इट्स अ पैरेलेलोग्राम। अपने को D के कोऑर्डिनेट ढूंढने हैं पहले तो। आफ्टर दैट दिस से स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AB एंड मिड पॉइंट ऑफ CD। मिड पॉइंट ऑफ AB को हम लेटर P दे देंगे, वो ढूंढेंगे, एंड मिड पॉइंट ऑफ CD ढूंढेंगे हम, एंड दैट विल बी Q। चलो चलो हगीज, A-2 कहानी, A-2 B-8 this is B-8 C4-4 Priyanshi, C4-4 all these points Priyanshi you joined, दिख रहा है प्रियांशी? आपको बनाना है पैरेलेलोग्राम। एवरीवन लिसन, आपको बनाना है पैरेलेलोग्राम। फिगर इज लाइक दिस। मैं बोलूंगा वेयर विल बी द फोर्थ वर्टेक्स, तो क्या करोगे आप लोग? देखो देखो देखो, you go for a straight line here and you go for a line parallel to this here, because you know the property that the opposite sides of parallelogram are parallel, और equal भी आप ले सकते हो। तो ध्यान से देखो दर्शी मैन, आई एम यूजिंग डिफरेंट कलर। भाई साहब हंडा जी देखिए, एक स्ट्रेट लाइन बनाओ इधर से आप, ऑपोजिट इज 10, तो यहां पे हम 10। मैं क्या बोल रहा हूं सुन भैया, भैया सुनिए ना पहले, बोलिए ना पहले। व्हाट आई टोल्ड यू दर्श, कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो अगर इसको काउंट करोगे हकानी तो 8 and 2 दिस इज 10 यूनिट्स, राइट दर्श? तो ऑब्वियसली ये वाले भी 10 होगा ना दर्श? तो यहाँ पे 4 यूनिट है, तो यहाँ पे 6 यूनिट जाइए आप, तो 10 यूनिट हो गया। यस, एंड देन हे मेहता यू विल गेट दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। मेहता टेल मी, ग्राफ देके बता दे बच्ची, डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ग्राफ देख, पहले एक्स बोलने का और फिर वाई बोलने का बेटा, तो बोल डी का। अरे डी का ऊपर जाए, यहाँ -6 है, અને y क्या है? y -4। तो हकानी एंड जाजू, आपको डी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, डी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए -6 -4। नाउ यू टेल मी महीते, ए महीत,
ए बी का मिड पॉइंट है, पूरा ए बी कितना है 10 यूनिट्स, तो मिड पॉइंट कहाँ पे आएगा 5 यूनिट्स पे, तो कैन यू काउंट 5 यूनिट्स 1 2 3 4 5। चल दिविजा तू बोल, ये ए बी का मिड पॉइंट लिया मैंने, 5 का 10 का हाफ 5 लिया, कैन यू टेल मी क्या नंबर होगा इधर और यहाँ पे। सो द मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज 3,2। यू टेल मी हंडा, इधर आजा हंडा, मिड पॉइंट ऑफ सी डी चाहिए मुझे, सी डी दिख रहा है, सी डी 10 यूनिट, तो एग्जैक्टली मिड पॉइंट ढूंढना आएगा आपको, क्या होगा ये -1 होगा ऊपर और यहाँ -4। आपको ग्राफ देख के ही सब कोऑर्डिनेट लिखना है, हकानी हांडा और उसके बड़े भाई हकानी। कम ऑन फिनिश इट फास्ट। चलो फिनिश इट फास्ट and then you all will start question number 10, very easy, that is square। स्क्वायर बनाना है हंडा, बनाएगा हंडा एकदम जल्दी, चलो जल्दी। I want you to finish fast। तू कुछ लाता नहीं है, सबसे छीन लेता है स्केल पेंसिल। मेरे पास पूरा पाउच पड़ा है, मेरे को पेंसिल नहीं है। क्या मतलब बेटा, पेन है। दिमाग कितना है लेकिन मेहनत नहीं करेगा तो क्या मतलब है, समझी, एग्जैक्ट पैराग्राफ दिखना चाहिए, कैसे? अपोजिट साइड को इक्वल बना के फास्ट। तो तेरा मुंह खुला था अभी, ऐसे पड़ेगा, ऐसे मैं देख रहा हूँ कैमरा में, एंड कंप्लीट फास्ट। हाँ हाँ। और आज नहीं बड़ी अच्छा ये वैसे भाई ये कैसे नहीं ये जो काम करेंगे ना और बंदा ओ भाई तो ये वो नहीं देता है तो भाई दे तो ठीक है। यार और
Come in, Darsh. 10 sum. अरे ये सब हाथ पकड़ रहा था तेरा इधर पैर पकड़ अरे सर इधर ना बहुत सॉफ्ट है इसकी गलती है सर मेरे को कुछ नहीं हो रहा मैं देखा तो क्या किया है क्या कर रहा है सर वो कब से मॉक कर रहा था चुपचाप कर सम भी स्टार्ट नहीं किया उसका हो गया देख कुछ नहीं किया है तो अबे उसका अरे पहले अबे उसका क्या बोलूं रणवीर सिंह अपने आप को रणवीर सिंह समझता है हमारे रणवीर कपूर कभी सिंह कपूर तो वो अच्छा है नहीं सिंह अच्छा है कपूर अच्छा है दोनों बन रहा है चलो नेक्स्ट समय आ जाओ निसर्ग झाजू तेरे को निकलना है ना बेटा स्कूल के लिए निकलिए कितने बजे स्कूल स्टार्ट होता है तेरा बेटा तू पढ़ना तेरे को नहीं पढ़ना तो क्यों टाइम पास कर रहा है नहीं you said same you know your timing your school starts by 9 you leave by 8:30 why you interfere in the talks चलो भाई साहब क्या नाम है उनका हक्कानी हो गया नहीं थकानी या 10 स्टार्ट किया कि नहीं आपने या ग्रेट चलो दर्श मैं आपके पेरेंट को बुलाने वाला हूं अभी 10 सम करके दिखा मुझे जल्दी और I'm starting the 10 sum right now. हाँ बेटा I'm starting the 10 sum now. चलो जल्दी करो बाय निसर सुनिए ए अभी तू कर भी नहीं रहा है पहले तो देखो सब इजी लगेगा तू करेगा तो इजी लगेगा बी पता नहीं है सी इज 410 डी इज चलो प्लॉट करो जल्दी स्क्वायर बनाओ स्क्वायर प्रियांशी इन हाउ टू मेक स्क्वायर you think I'm an idiot sitting here I can slap you and throw you out of the class I don't want to spoil that relations man first complete the square get the coordinates of B then they say find midpoint of BC midpoint of CD and point of intersection of diagonal मेहता जी फास्ट Four, 2, 4, 6, 8 and this is 10 A minus 2 4 दिविजा A minus यहाँ पे आपको फर्स्ट आया बेटा कोऑर्डिनेट्स A minus 2 4 C 4 10 प्रियांशी C 4 10 A minus 2 4 C 4 10 D minus 2 10 come on हंडा हंडा तो आपको ये सबको ज्वाइन करना है एंड टू फॉर्म स्क्वायर यू लुक एट द डायग्राम just to form square
So we have A, B. Chal Darsh, look at the graph and tell me coordinates of B. 4, 9, 4. The first answer. Hakani, midpoint of BC. Hey, Hakani, ये कितने units है? Oh, 6. 6. का exactly half to 3 लेगा मेरे बच्चे. गुड्डू, Yeah. tell me what is the midpoint here? AB, BC का midpoint के coordinate बोल गुड्डू. 4,7. Very good. And last answer, you will tell me, Miss Anya Shukla, midpoint of CD. ये CD भी 10 units, 6 units ही होगा ना? प्रियांशी, it's a square. Square का all sides are equal. तो 6 का half क्या आएगा प्रियांशी? 3. बोल प्रियांशी, ये क्या होगा? Midpoint of CD बोल. जानती जो है ना बोल, ग्राफ जो है ना बोल. Coordinates हो से ना? अबे प्रियांशी. दिव्यांशी, बोल तू बेटा. नीचे आवानु पहला x पर. मैंने बोला था 10, 1,10. Come on, come on. And the last point, Haqqani, point of intersection of diagonals. So you're going to draw both the diagonals and where they intersect, that point O is, tell me, Miss Mehta, कोई नहीं बोलेगा. Mehta, point of intersection of diagonal. देखा जाता है ना? In a coordinate ball, don't do any silly mistake. 1 second. Yes. क्या हुआ हांडा बोल? बोलो बोलो हैंडीमैन. हो गया बेटा? गुड. नेक्स्ट एक्सरसाइज में आ जाइए. Yeah, 1 minute. यस सर. हाकविंदर. आओ. Now, second X. Hey, show me this. Show me your graph. Come here. I can't do it. You come here then. Tell me what you can't do it. I thought it's coming like this, and this. When this is C, when it should be here, but B should be here. So it makes us correct. तो चेंज इट. तो इसको B बनाना. 20. ये बाद में आएगा. ये पहले आएगा ही नहीं. ये लास्ट में आया. So but B का C यहाँ पे आ रहा है. अबे C is 410. How 10 can come here? 10. अबे 410 है वो. ये क्या? 410. हाँ बोलो. वैसे ही बोला था. आपने सुना रॉन्ग और प्लॉट भी रॉन्ग किया. Come on. Show me Priyanshi. तारो थे. ए आन्या दिखाओ मुझे ग्राफ दिखाओ. हकानी, show me your graph. थोड़ा और नजदीक ले लो ग्राफ को जरा. एंड राइटिंग पार्ट कहाँ पे? कोऑर्डिनेट्स का राइटिंग पार्ट. ए ओके ओके. ए यू शो मी मैन. ये सब कौन लिखेगा? पॉइंट, मिड पॉइंट एंड ऑल दैट थिंग. Where? Show me. This part. 1, 2, 3. Where is that? You just wrote ABCD, man. चलो. Now we go for 26B, जहां पे हम ग्राफ बनाना सीखेंगे. कम ऑन शुक्ला जी. ऑलरेडी आपने सीखा है लेकिन उसको और आगे बढ़ाएंगे हम. Done everyone? Writing part, scale, coordinates of midpoints, write fast. Now what? Darshan, जल्दी कर. अभी next exercise, Darshan. There are 3 exercises. 3 के 4. 3. चलिए. शुक्ला जी. 26B में ग्राफिकल जो है बहुत इजी है. मैं फटाफट से मेन कैटेगरी लूंगा. We have done this type of sums, but we are repeating just for revision. आइए शुक्ला जी. सेकंड में ग्राफ बनाना है. I'm going to really talk to your parents today. He is having some disorder. पढ़ता रहेगा, अचानक से ऐसे देखने लगेगा किसको, एकदम किसका हाथ पकड़ लेगा, अचानक खड़ा होके बाहर चला जाएगा. This is something different. अभी थोड़ा कंट्रोल में आ गया. वरना जयेश सर मेरे को बोलते थे फटाफट निकल जाता था. तो ऐसे. Now, Miss Anya
Mahit. You seen monkeys? इसको बोल रहा हूं मैं. When you do something on monkeys, no, they get more excited and they just jump double. इसका हिस्सा है. महित हंस रहा है ना, मतलब उसको लग रहा है I'm doing great thing और करता हूं मैं. अरे नहीं उसको जैसे वो हंसता है मेरे को हंसी आ रही है. बस बेटा बस दर्श. Darshan. So we have to do all of these points on different graphs on the same graph. Oh no, only one graph man. इतने सारे. सर उसको कुछ बोलते हैं. He's not doing anything. You sit here, he will be relaxed. But you sit anywhere, you will irritate. Okay, you sit last bench. चल. वहां बैठ के भी तू डांस करेगा. चलो, everyone. In one graph, we are going to draw all the lines. Akani. हाँ? Yeah, it's very easy. 4 लाइन ड्रॉ करनी है खाली अपने को. आइए. दर्शन पांडे. आइए. X, Y. You tell me, Darsh. X plus 3 equal to 0. मतलब X is what? Minus 3. Y plus 6 is 0. मतलब Y is what? 2y minus 5 is 0. So minus 5 goes on that side. So plus Y is 2.5. And Y0, X0 तो डायरेक्ट है. You know, Y0 मतलब कौन सी एक्सिस? X एक्सिस. And X0 मतलब कौन सी एक्सिस? वो तो बनाने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी बन गई है. Are you getting this? दर्शन पांडे, Y एक्सिस पे X0 होता है और X एक्सिस पे Y0 होता है. चलो. Now, Darsh and Miss Divija. 1, 2, 3, 4. -1, -2, -3, -4. 1, 2, 3, 4. -1, -2, -3, -4. चलो मिस दिविजा मल्होत्रा. X इक्वल टू -3 कहां पे आएगा बेटी? X इक्वल टू -3 X एक्सिस पे आएगा ना. मिस मेहता, स्ट्रेट लाइन जो x में से 3 में से निकलेगी, x एक्सिस के -3 से निकलेगी, यू कॉल इट एज x इक्वल टू -3. सेम वे यू टेल मी महिते, y इक्वल टू -6 कहां से आएगी? y इक्वल टू -6 y एक्सिस पे -6 पे. इरेज कर दे गुड़िया. महित y इक्वल y इक्वल टू 2.5 कहां पे आएगा? यहाँ पे आके दिखाइए मुझे. y इक्वल टू 2.5. कम y इक्वल टू 2.5 कहां पे आएगा? दिखाइए मुझे जल्दी. दैट y इक्वल टू 2.5 कहां से ड्रॉ करूंगा मैं? संभालना नीचे बेटा. y इक्वल टू 2.5. फास्ट जल्दी यार, इट्स वेरी इजी. 2.5 बराबर दिखाओ मुझे. 2.5 सर 2.5 वाला 2.5 कौन सी एक्सिस पे बेटा? ओ y एक्सिस कैसे देखेगा? y एक्सिस तो y 2.5 मतलब ये हो. हाँ तो कैसे लाइन बनाएगी यहाँ से तू? ये पॉइंट ऐसा समझी तू? तो इतना क्या घबरा रही है? कम ऑन, सिट डाउन बेटा. कम ऑन शुक्ला जी और उसके बड़े भाई हांडा जी. हांडा कम ऑन यार, इतनी अंगड़ाइयां तो कोई नहीं लेता बेटा. कम ऑन स्टार्ट. दर्श स्टार्ट. हाँ क्या स्टार्ट? मस्ती स्टार्ट कर दे. चलो डन. कम ऑन दर्शी, इतना स्लो कैसे हो गया? हकानी डन. So if we just draw one more line. Priyanshi, you tell your dad that tomorrow we are supposed to meet, okay? But tomorrow I have some work, so I will not coming to this center.
So better to meet on Friday. Or you send me your address, I'll come to your place nearby if it is. But remember, tomorrow you just tell him that not possible. Beta? Meeta? तू जल्दी करना बेटा. तेरे बाल देख के मुझे है ना. डन. हो गया तेरा महीते घूमने जा रहा है ना नेक्स्ट वीक फिर से. यू आर एंजॉयिंग लाइफ लाइक एनीथिंग. तेरे पेरेंट को पता है ना कि तू 9th में ही है. कि still they are thinking that you are in junior senior. तो तू क्यों जा रहा है? तू थोड़ी करने वाला सर्जरी. मेरे घर पे आ जा. क्या भाई, इतने बड़े बच्चे रह सकते अकेले घर पे? और कर दूंगा. गर्लफ्रेंड को बुलाएगा, पार्टी करेगा. बड़ा बच्चा है ना, तो इसके लिए नहीं छोड़ के जा रहा है. चल डन दिस. मेहता जी दिखाइए ग्राफ. एरो बना होना प्रॉपरली. हाँ, एरो, जस्ट स्ट्रेट लाइन नहीं, प्रॉपर एरो, और वहां पे उसका नाम लिखना है. कम ऑन, यू आर डन विद दिस भाई साहब. हक्कानी डन. Yeah. Now next sum. What anywhere? Now look at this question 3. बच्ची ध्यान से देख. एक ग्राफ बनाना है प्रियांशी, y इक्वल टू -x का. ये सब बहुत बेसिक है, इसके लिए हम जस्ट टेकिंग टाइप वाइज एंड मूविंग अहेड. x प्लस 2y इक्वल 0 का एक ग्राफ, और एक तीसरा ग्राफ बना देंगे 3x प्लस 2y इक्वल टू 0 का. कम ऑन प्रियांशी, क्या बनाते थे पता है ना? xy का टेबल. चल प्रियांशी, किसके लिए अज्यूम करेगी तू? x के लिए कि y के लिए? अबे जो राइट साइड पे होता है उसके लिए लेते हैं. किसके लिए लेगी तू? x. तो से x 1 होगा. 1 डाल x की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू क्या आएगी? -1. यू पुट x 2, तो y क्या हो जाएगा? यू पुट 3, तो इट बिकम व्हाट? कम ऑन, वी गॉट 3 पॉइंट्स. हकानी, हांडानी एंड कुलकर्णी. चल ऊपर देख. x प्लस 2y 0. तो दर्श पहले 2y को वहां पे शिफ्ट कर डालो. चल अगेन दर्श टेल मी, किसके लिए अज्यूम करूंगा मैं? x के लिए कि y के लिए? क्या लेगा y के लिए? बोल चल. 1 ले ले, तो x क्या आएगा? -2. y को 2 ले ले, तो x क्या आ जाएगा? -4. और -1 ले लेगा. दर्श सोच के बोल, y अगर -1 डालूंगा तो x क्या आएगा? वेरी गुड. चलो जल्दी टेबल बनाओ हकानी. And Miss Malhotra, plus 3x will go on that side, so -3x, and then 2 will go down, so it's -3/2x. इसका भी टेबल. मल्होत्रा किसके लिए अज्यूम करेगी तू? लास्ट वाले में किसके लिए अज्यूम करेगी? क्या बोलती तू? जो राइट साइड पे होता है उसके लिए लेता है ना, तो y के लिए लेके करेगी. चल बोल क्या लेगी x के लिए तू? And listen everyone, listen. You take such value of x, Mahit, you take such values of x which get divided by 2, क्योंकि अपॉन में 2 है. तो पहले क्या लेगी तू? यस. तो हकानी x के बदले 2 ले ले. चल तो क्या आएगा? -3. 4 ले ले, -2 ले ले. काय बोली? चलो अंडाजी, start plotting 3 points and 1 line. For that, where is my 1 - 1? Here. Where is my 2 - 2? Here. Where is my 3 - 3? Here. 3 लाइन हो गए, 3 पॉइंट हो गए प्रियांशी. You just join them by a straight line, है ना? ये हो गई आपकी लाइन, इसका नाम है दर्श y इक्वल टू -x. ऑलवेज 3 पॉइंट लाइन. चल सेकेंड आन्या, -2 1 कहाँ पे बेटा? -2 1 here, -4 2 here, and 2 - 1
Can you draw a straight line? अकानी, अगर आपके पॉइंट्स रॉन्ग होंगे तो आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, तो यू नीड टू चेक कि आपका टेबल रॉन्ग है कि आपके प्लॉटिंग में कुछ मिस्टेक है। ये आपकी लाइन हो गई x plus 2y equal to 0, and the third line 2 minus 3, 2 minus 3 is here, 4 minus 6 is here, and minus 2 3 is here. कुछ रॉन्ग प्लॉट हुआ इधर? minus 2 3 I said, right? वो सही है, तूने minus 2 डाला, माइनस कट हो गया, प्लस 3 आ गया, वो राइट है। then you took 4, तो minus 6 था, वो भी सही है। you put 2, ये गलत था इधर। चलो, minus 6 will be here. Anda, 4 minus 6. दर्शन पांडे। इसके पाँव में खुजली आ रही है। I'm very confused. पॉइंट्स मेरे रॉन्ग तो प्लॉट नहीं किए, सब राइट है। ओ माय गॉड, मैं कितनी बड़ी ब्लंडर कर दी इधर, इसके लिए हो रहा है। ये था आपका -5 और यहाँ पे आपका -6। द पॉइंट इज 4 minus 6 विल बी सबसे नीचे, भी लाइन आएगी स्ट्रेट। So you get 3 lines. जल्दी। दर्शन, Well, what if I'm like this? Oh my God, shit. man, Yeah. chill. You finish fast. All 4 done. Great. टेबल के साथ all 3. मेहता जी, आप कहाँ पहुंचे? मिस मेहता। दर्श जल्दी करो भाई, जाने नहीं दूंगा तुझे मैं। Sure, sure, sure. बोल। So for me, all the lines are coinciding in the center. या
Okay. Mine is just little rough. All your line will pass through origin. So is this right? Yes, all will pass through origin. Okay. So can we leave? Yeah. Bye, sir. So do we have class with Harvard? Yeah.